अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आगाज करते हैं आज के लेसन नंबर 25 के पार्ट 27 का 25वें सबक का 27वां हिस्सा। आज के न्यू अल्फाज हैं डियर स्टूडेंट्स, 4 अल्फाज हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। 156, 157, 158 और 159। वर्ड नंबर 156, 57, 58 एंड 59। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला वर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ईयुआन। नाउन है ईयुआन। ईयुआन हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल। 这是一个大医院。这是一个大医院。这是一个大医院。这 means this 是 is 一个one 大 big 医院 hospital。这也是है एक大 बड़ा 医院 अस्पताल। ये एक बड़ा अस्पताल है और this is one big hospital. This is a big hospital. We can say one or a. This is a big hospital. Okay, dear students, next word है, ये नाउन है और ये है इज। ये भी नाउन है इज। इज का मतलब है चेयर और या फिर कुर्सी। 小狗在椅子下面呢。小狗在椅子下面呢。小狗在椅子下面呢。小狗 little 狗 dog 在椅子尖下面呢 under。छोटा गौ कुत्ता 在 है 椅子 कुर्सी 下面 के नीचे न। छोटा कुत्ता कुर्सी के नीचे है और little dog is under the chair। little 小狗 dog 在 is 椅子 chair 下面 under। तो little dog is under the chair। 小狗在椅子下面呢。अगला जो लफ्ज है वर्ड नंबर 58 怎么 is a pronoun और is noun। 怎么 word is used for inquiring for property, condition, way and cause etc। किसी मकसद, हालत, सूरत हाल के मुतालिक पूछना, कैसा, कैसे, कैसी वगैरह वगैरह। 你怎么去北京？你怎么去北京？你怎么去北京？你 means you， 怎么 how to 去 how 去 to go 北京 Peking。你 तुम 怎么 कैसे 去 जाओगे 北京 बीजिंग। तुम बीजिंग कैसे जाओगे और how will you go to Peking। 你怎么去北京？आखिरी लफ्ज है स्टूडेंट्स वर्ड नंबर 159 怎么样 ZENMEYANG falling tone। 怎么样 is also pronoun. It is 怎么 and it is 怎么样。One word YANG is extra over here。 怎么样 how about it or what do you think। Inquiring for comments and suggestion and independent sentence।
I'm gonna repeat it again. दोबारा से दोहराते हैं. How about it? What do you think? Inquiring for comments and suggestions in independent sentence. राय, तजवीज, मशवरा लेते वक्त पूछना कि कैसा है. राय, कमेंट्स, सजेशन, तजवीज.